May I have the permission of Honorable the Chief Justice to commence the proceedings of the court? Please do. I request Honorable the Chief Justice to address the August gathering of this office. My esteemed brother and sister judges, Mr. S.C. Verma, Learned Advocate General, who is also representing the State Bar Council, Mr. Abdul Wahab Khan, President, High Court Bar Association, Mr. Ramakant Mishra, Learned Assistant Solicitor General of India, Learned Senior Advocates, and other distinguished members of the Bar, Registrar General, officers and staff of the registry, judicial officers present, ladies and gentlemen. As you know, Honorable Justice Gautam Chourdiya is due to retire and demit office on 3rd of July 2022. Today being the last working day before 3rd of July 2022, we have assembled here to bid farewell to Honorable Justice Gautam Chourdiya. Justice Chourdiya started his career as an advocate after being enrolled with the Madhya Pradesh State Bar Council in August 1984, and he practiced at District Bar Rajnandangao. Thereafter, Justice Chourdiya joined the judicial service as a civil judge, Class 2, in the month of November 1987, and during his illustrious career, he served as a judicial officer in various capacities, such as Chief Judicial Magistrate, Principal Judge of Juvenile Justice Board, Additional District and Session Judge, Member Secretary in the Chhattisgarh State Legal Services Authority, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Registrar Vigilance, Registrar Judicial, Registrar General of this Court, etc. His Lordship was elevated as a judge of this court on 18 June 2018. During the span of last 8.5 months that I have been here, I have developed a close relationship with Justice Chourdiya. I have found him to be an extremely soft-spoken and amiable person. I have shared the bench with him, and during the proceedings in the court, I have always found him to be calm, collected, and composed. I have received very able assistance from His Lordship while sitting in the bench, and I also received from His Lordship invaluable suggestions while discharging my administrative work. I was immensely benefited by His Lordship's inputs and suggestions. During his entire service career, His Lordship had demonstrated highest degree of ethical conduct and had admirably served the cause of justice. As a judge of this court, Brother Justice Chourdiya had rendered a number of erudite judgments which would guide the legal fraternity in rendering justice. We will feel his absence from the bench. On the eve of his superannuation, I once again place on record my deep appreciation for the help and cooperation extended by Brother Justice Chourdiya during my tenure as the Chief Justice of this court. As we bid farewell to Brother Justice Chourdiya, we pray to Almighty to grant him long life, good health, peace, and happiness. I am sure that Brother Justice Chourdiya will continue to serve the cause of justice with his vast experience and knowledge in meaningful ways in days to come. I, on my own behalf and on behalf of my brother and sister judges and the registry, wish Brother Justice Chourdiya, Madam Chourdiya, and all the family members the very best.
I request the Advocate General of the State of Chhattisgarh, who is also the representative of the Special Committee of the State Bar Council of Chhattisgarh, to deliver the farewell address. My Lord Honorable Chief Justice Shri Arup Kumar Goswami ji, Honorable Judges of the High Court of Chhattisgarh, Shri Abdul Wahab Khan, President Chhattisgarh High Court Bar Association, Shri Ramakant Mishra, Assistant Solicitor General of India, Senior Advocates and young members of the Bar, Registrar General and the Registry Officers Chhattisgarh High Court, Director GOT, and the Judicial Officers of the State, distinguished guests, member of the print and electronic media, ladies and gentlemen. Today we have assembled here this evening to bid farewell to Honorable Mr. Justice Gautam Chourdiya, who has served as the judge of this sacred institution for more than about 4 years, and wish you a happy, cheerful, long retired life. These proceedings are meant to share, honor, some thoughts on the meaningful judicial theories, appreciate Honorable Justice Chourdiya's career, share words of goodwill, best wishes, and express gratitude to His Lordship on behalf of the law officers of the state, members of the legal fraternity, being ex officio chairman of the Bar Council of Chhattisgarh, who desire to say something on this steadiness, humility, integrity, and hard-working, fairness, and uprightness of His Lordship. My Lord Justice Gautam Chourdiya was born on 4/7/1968 Rajnandgaon, and after completing LLB, Your Lordship joined the judicial services in the year 1987 and worked in various capacities at different places of Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and he has a rich and vast experience working in various fields, and in last worked as Registrar General of this High Court. With his infinite and invariable courtesy to all in and outside the court, he endeavors to all with whom he comes into contact. This court has seen some of the finest judges being elevated from the state higher judicial services, essentially persons trained to administer law-backed with decades of engagement and full-fledged in judicial continence. Is without doubt a formula recipe for success story for these destined to hold the high judicial post. My Lord served with distinction the judicial services of the state. His tenure as a judicial officer in the erstwhile state of Madhya Pradesh and after formation of the state is remembered by the members of the bar with fond memories for its warmth and responsiveness. Your Lordship is a person endowed with a polite disposition. Honorable Justice Gautam Chourdiya has rendered all possible assistance that the institution expects from a judge in discharging his constitutional obligations, and he shall be remembered for his positive support in all our court-related activities, as well as the discipline he mentioned on and off the bench. It is said that a judge must have the grace to hear patiently, to consider diligently, to understand rightly, and to decide justly. With a sense of humility, Justice Chourdiya more than meets these tests. A patient hearing to a counsel is all that a counsel needs, and that is what a counsel remembers most. Courtesy is the second nature to you. Your Lordship has never made an unnecessary remark during the course of any argument. I venture to take this opportunity to mention that the greatest quality that a judge may possess is the quality of tolerance and infinite patience. Those are very difficult things themselves. This is something which one should strive to achieve and maintain. Your Lordship is retiring from this court with the goodwill and good wishes of the entire bar and their blessings. The right to judge a judge is rightly conceded to the bar, and I believe that your Lordship's performance is universally acceptable and admits of no appeal. Justice Chourdiya is a spiritual person, and he has proved that faith is the soul of success. As he prepares to depart from this court, I have to say that we will miss you deeply. However, I take this opportunity to express gratitude, appreciation, and regard to the Honorable Justice Gautam Chourdiya that he would make permanent place in our memory. We shall remember him, may even meet and seek the indulgence of his affectionate company and guidance. I wish him a successful life, and also for his family members, also on behalf of the Office of the Advocate General, along with all my colleagues, and being ex officio chairman of the Bar Council of Chhattisgarh. Thank you, Jai. I request the President, High Court Bar Association to deliver the farewell address. माननीय मुख्य न्यायाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी साहब, सभी उपस्थित सम्माननीय न्यायाधिपतिगण, छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता एवं छत्तीसगढ़ राज्य
विधिज्ञ परिषद की विशेष समिति के सदस्य माननीय सतीश चंद्र वर्मा जी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री रमाकांत मिश्रा जी, माननीय रजिस्ट्रार जनरल व रजिस्ट्री के सम्माननीय अधिकारीगण, माननीय न्यायमूर्तिगण के उपस्थित सम्माननीय पारिवारिक सदस्यगण, सम्माननीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, अधिवक्ता साथियों एवं उपस्थित समस्त सम्माननीय जन, माननीय न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया साहब का जन्म दिनांक 4/7/1960 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद विधि महाविद्यालय राजनांदगांव से ही LLB की परीक्षा विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची मेरिट में उत्तीर्ण की। फिर आपने मध्य प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद में दिनांक 31 अगस्त 1984 को अधिवक्ता के रूप में पंजीयन होने के बाद जिला न्यायालय राजनांदगांव में ही वकालत प्रारंभ किया था। आप प्रारंभ से ही मेधावी रहे हैं। दिनांक 23/11/1987 से न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के पद पर नियुक्त हुए। इस प्रकार प्रारंभ से ही अपनी कुशाग्र बुद्धि, लगन, सूझबूझ एवं मेहनत से कार्य करते हुए ACGM, CGM, ADJ, DJ आदि पदों पर दायित्वों का निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जनरल के भी पदीय दायित्वों का निर्वहन किया। उसके पश्चात छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के गरिमामयी पद पर दिनांक 18 जून 2018 से अब तक कार्यरत रहे हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आपका कार्यकाल मात्र 4 वर्षों का रहा है। इस दौरान आपने कुशलतापूर्वक कार्य किया है। आपने अपनी पारिवारिक त्रासदीपूर्ण दुखद स्थिति पर भी समर्पित भाव से अपने न्यायालयीन दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है, जिसके लिए हम अधिवक्ता संघ की ओर से आपको साधुवाद देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आपका अधिवक्ता पंजीयन, जो कि वर्तमान में निलंबित है, सस्पेंड है, वो अब बहाल हो जाएगा और आप हमारे अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ सम्माननीय अधिवक्ता के रूप में सदैव हम सभी अधिवक्ताओं को अपने साथ पाएंगे। न्यायमूर्ति श्री चौरड़िया साहब एवं उनके पारिवारिक जनों को मैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ की ओर से सफल कार्यकाल की हार्दिक बधाई देता हूं एवं आपके अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करता हूं एवं शुभकामनाएं देता हूं। I request the Assistant Solicitor General of India to deliver the farewell address. My Lord, Hon'ble Chief Justice Arup Kumar Goswami ji, Hon'ble Chief Justice, High Court of Chhattisgarh, and all Hon'ble Judges of High Court of Chhattisgarh. Sri Satish Chandra Verma ji, respected Advocate General, State of Chhattisgarh, and ex-officio Chairman of State Bar Council of Chhattisgarh. Sri Abdul Wahab Khan Sahab, President, High Court Bar Association Bilaspur, Registrar General, all Judicial Officers, Sri R.K. Tiwari, Principal Secretary Law and Legislative Affairs, State of Chhattisgarh, Sri Radhakishan Agrawal, District Judge Bilaspur, Sri Jugal Kishore Gilda ji, former Advocate General, State of Chhattisgarh, senior advocates and respected member of the bar, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today we have assembled here this afternoon to bid farewell to my Lord Hon'ble Justice Sri Gautam Chourdiya ji, who demitting his office on supervision after serving as judge of sacred institution for more than 4 years. Hon'ble Shri Justice Gautam Chourdiya was born on 4 July 1960 at Ranjangaon. My Lord did BCom LLB, and after completion of LLB, my Lord entered in judicial service in the year 1987 as Civil Judge Class 2. My Lord first posting was at Raipur in the year 1988. My Lord was posted at Raipur, Balauda Bazaar, Garyaban, Civil Judge Class 2. Thereafter promoted as Civil Judge Class 1 in the year 1994. And my Lord promoted as Additional Chief Judicial Magistrate and posted Amwara in the 1997. My Lord promoted as CGM in the year 1998 and posted at Raipur. After that, my Lord promoted
on post of additional district judge and posted at Raipur in the year 2002. Thereafter, my lord appointed as a member secretary Chhattisgarh State Labor Service Authority in the year 2005 and promoted as a district Sanjay Chandgir Chapa. My lord was also appointed as a Registrar Vigilance High Court of Chhattisgarh. My lord was also posted as Director State Judicial Academy in the year 2014 and my lord appointed as a Registrar General in the year 2017 at High Court of Chhattisgarh. After serving as a Registrar General, my lord elevated as a Judge High Court of Chhattisgarh on 18 June 2018. Seeing my lord's journey of life is an inspiration for young lawyers and also for the law students who are pursuing the course of law. As a judge of Hon'ble High Court, my lord has upheld the rule of law and in spirit of the Constitution. My lord has delivered several judgments and decisions in many areas of substantive and procedural law. It is due to hard working and vigilance, adhering professional ethics and ability to work in a team as a gain trust of the members of the bar who feel him as one of their own. My lord has always exhibited paramount standard of ethical conduct that has stood has always been acknowledged for being his and a fortnight to one person. My lord is also an outstanding and known for giving patient hearing to everyone. This has also resulted in deep admiration and bonding affections for members of the bar. Age is just number. I wish you never retire from the heart and mind. Wishing the best retirement days. The EU of superannuation, I, on behalf of Government of India and their law officers, I would like to convey my gratitude to my lordship, service in this court and for law and all the faith and trust bestowed upon us, guided us towards us. We shall fondly remember you, lordship contribution in this honorable court. We wish my lord all the best for the future life and endeavor. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. I request Honorable Justice Gautam Chourdiya to address on this occasion. Om Aram Vande Guruvaram. Honorable the Chief Justice Sri Arup Kumar Ji Goswami, Honorable brother and sister judges of Chhattisgarh High Court, Learned Advocate General Sri Satish Chandra Verma Ji, Learned President High Court Bar Association Sri Abdul Wahab Khan Ji, Learned Assistant Solicitor General Sri Ramakant Mishra Ji, Learned Senior Advocates, Member of the Bar, Registrar General and the Registry Officers, Director Judicial Academy and Additional Director, my respected brother Sri R. K. Agarwal, District and Session Judge, Bilaspur, respected Sri Jugal Kishore Ji Gilda, former Advocate General, ladies and gentlemen, and respected media person. Jai Johar, Jai Chhattisgarh. Today, farewell address has been made on the eve of my retirement on 3rd July 2022. I am very thankful to all of you who have spoken very kind and generous words about me. I am grateful to the Almighty for giving me courage and strength to maintain the dignity of this High Court. I take this opportunity to express my gratitude to the Honorable Sri T.V. Radhakrishnan, the then Chief Justice of and the then Collegium Member Honorable Sri Justice Pritinkar Divakar and Honorable Sri Justice Prashant Kumar Mishra, who reposed the faith on me, recommended my name for the judgeship. I am also thankful to the then Chief Justice of India, Honorable Sri Deepak Mishra, Honorable Justice Ranjan Gogoi, and Honorable Justice Sri Justice Chalmeshwar, who, after interaction with me at Delhi, reposed the faith on me that recommended my name to the Honorable President for appointment as a judge of the Chhattisgarh High Court. It is time and opportunity to express my sincere gratitude to all the concerned who assisted me throughout from beginning to till today, discharge my duty in judicial responsibility and functioning. With the kind permission of the Honorable the Chief Justice, I would like to reply further to farewell address in Hindi, as I think it would be more convenient for me to express my gratitude, appreciation and satisfaction in my mother tongue, Hindi. मेरे न्यायिक जीवन के 3 वर्ष मैंने अधिवक्ता के रूप में प्रारंभ की और उसके पश्चात 34 वर्ष 7 माह और 10 दिन तक मैं न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता रहा। अपने दायित्वों और क्षमताओं को निर्वाह करने के लिए मुझे न जाने कितने लोगों का सहयोग मिला। मैं अगर शब्दों में उनकी अभिव्यक्ति करना चाहूँ तो शायद दिन कम पड़ जाए, इसलिए मैं हृदय से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने दायित्व के निर्वहन में सहयोग किया।
मैंने 23 नवंबर 1987 को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के रूप में राजनांदगांव में पदस्थापना होने के पश्चात अनेक स्थानों पर न्यायाधीश के रूप में काम किया। मैं उन्हीं सभी अधिवक्ता संघ के साथियों को, वहां के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, कर्मचारी और अधिकारियों को, जिन्होंने मेरे जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में सहायता की, सहयोग किया और निष्ठा से अपना दायित्व निभाने में हर पल मेरे साथ खड़े रहे। उसके पश्चात मैंने 18 जून 2018 को उच्च न्यायालय के बिलासपुर न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया और 3 जुलाई को मैं अपने पद से निवृत्त हो रहा हूँ। मुझे मालूम है कि न्यायिक जीवन कोई केक वाक या आसान रास्ता नहीं है और यह पथ तय करने में और तब तक पहुंचने में न जाने कितने लोगों की सहायता, सहयोग, मार्गदर्शन प्राप्त करना पड़ता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस उच्च न्यायालय के उन सब न्यायाधीश, लगभग मैंने 10 न्यायाधीशों के साथ, चीफ जस्टिस के साथ काम किया जो इस उच्च न्यायालय में पदस्थ रहे। अनेक पदों पे मैं रहा, मेंबर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, विजिलेंस। उस समय भी मुझे उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश साथी और मुख्य न्यायाधिपति का बहुत सहयोग मिला और मार्गदर्शन भी मिलता रहा। आज भले ही वो कुछ लोग यहाँ पर नहीं हैं, कहीं अन्य स्थानांतरण पे हैं, कुछ लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मैं उन सब के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी पदस्थापना के साथ में जिन लोगों का सहयोग मिला, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने उस गुरु को नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरे जीवन को इस मार्ग पर लाने के पहले दिन ही जब मैंने न्यायाधीश के रूप में 23 नवंबर 1987 को शपथ ली थी, मुझे सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। मैं उस उदाहरण को नहीं भूल सकता। जब मैं न्यायाधीश के पद पर 23 नवंबर को ज्वाइन करना था, मेरे गुरु दिल्ली में विराजमान थे, मैं उनके दर्शन करने गया तो उन्होंने मैंने कहा कि मेरा धर्म क्या है। उस समय तक मेरी धर्म में ज्यादा आस्था नहीं थी, मैं धार्मिक लोगों से ज्यादा मिलता नहीं था और न ही मेरे को ज्यादा विश्वास था कि धार्मिक लोग कुछ कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उन संत से मिला, उस संत महात्मा से मिलने के बाद मैंने कहा कि मेरा धर्म क्या है, इस युग में चलने के लिए मेरा धर्म क्या है। तो उन्होंने एक शब्द में मुझे जो कहा था मेरे जीवन भर के लिए, वो कह दीजिए कामधेनु है, चिंतामणि है, कल्पतरु है, मेरे जीवन को बदलने वाला क्षण था। उस गुरु की वाणी ने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। मैंने न्यायाधीश की पद की शपथ लेने के पहले 23 नवंबर 1987 से जब मैंने अपना धर्म पूछा तो उन्होंने एक बात कही, इस भौतिक युग में अगर कोई ईमानदारी से अपना जीवन जीता है तो इससे बड़ा धर्म संसार में कुछ हो नहीं सकता। मेरा विश्वास है कि आज इस देश को नहीं, पूरे विश्व को विश्वास और ईमानदारी की जरूरत है और मैं उस संत का आभारी हूं जिसने मुझे इस पद पर आने से पहले ईमानदारी से जीने की शपथ दिलाई थी और शायद वही उसी का परिणाम है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया। मैं अपने समस्त गुरु भगवान आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महासमंद जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे माता पिता को मैं इस क्षण पे भूल नहीं सकता जिन्होंने विषम परिस्थितियों में, अनेक कठिनाइयों में, जब उनके पास कोई साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थे, उन्होंने अपने कंधों पर बोझ उठाकर हमारे जीवन को संवारा। मैं आज हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से क्या, मैं उनके चरणों पे अपना सर रखकर उनके दिए हुए आशीष से आज तक बढ़ रहा हूँ और आगे भी बढ़ता रहूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जानता हूँ कि एक अच्छे साथी की सबको जरूरत होती है। मेरी पत्नी संगी, जिसे मैं संगी कहता हूँ, छत्तीसगढ़ी में संगी का मतलब साथी होता है, वैसे उनका नाम संगीता है। उनका जीवन भर हर कठिन घड़ी में मेरे साथ रही और उनकी सादगी, सरलता शायद मेरे ईमानदार रहने में बहुत बड़ी सहायक है। मैं उनके प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पारिवारिक जनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मित्रों को जो सब इतनी दूर से आज सब चलकर मेरे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए हैं, मैं अपने मित्रों, पारिवारिक जनों, सामाजिक जनों, सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं 4 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर पदस्थ रहा। मैंने जब पदभार ग्रहण किया, मैं आपसे सत्य कहता हूँ मेरा इंग्लिश का ज्ञान बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने अपने आप को डेवलप किया मेरे साथियों के साथ। मेरा स्टाफ जो है, पूरा जो ऑफिशियल स्टाफ है मेरा, जिसने दिन रात मेरे साथ परिश्रम किया है। मैं अगर सुबह 10 बजे कोर्ट आता था और 5:30-6 बजे जाता था, तो वो सुबह 9:30-10 बजे आके शाम के 7 बजे तक जाते थे। मेरी गलतियां भी ढूंढते थे। मैं अपने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, मुख्यतः मुख्य न्यायाधिपति महोदय, मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जजेस जो मुझे हैं, हमेशा मार्गदर्शन देते रहे कि न्यायाधीश का जीवन कैसा होना चाहिए। मैं उनको देख देख कर प्रेरणा लेता हूँ। मैं आज असत्य कह नहीं सकता, मेरे जीवन का अंग नहीं है। मैं गोस्वामी साहब के साथ जब बेंच शेयर कर रहा था, इनके पूरे कंडक्ट को देखता था तो मुझे लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। मेरे न्यायाधीश साथियों को देखता हूँ तो मेरे जीवन में अभी शुरुआत है, ऐसा लगता है। वैसे तो कुरान शरीफ में कहा गया है कि कब्र तक ज्ञान की खोज करते रहें। आप जब तक संसार न पहुंचाएं, जब तक के तब तक ज्ञान की खोज करते रहें। ये ज्ञान की खोज ही अंततः आपको मुक्ति का मार्ग देगी। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे स्टाफ के सभी सदस्य जिन्होंने मेरे ऑफिस में काम किया, जिनके प्रति मैं शब्दों में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनके परिश्रम के कारण ही मेरा शायद व्यक्तित्व ज्यादा विकसित हुआ है। मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में सभी अधिकारी, श्री सुनील कुमार चौहान, डिप्टी रजिस्ट्रार, श्री रमेश कुमार भट्टी,
Assistant Registrar Sri Mohammad Akhtar Khan, Assistant Registrar Sri Ram Kumar Sahu, Section Officer, Reader Srimati Steno Srimati Atita Dubey, Private Secretary Akhilesh Gaur, Private Secretary Sri Chandkan Devangan, Stenographer Nadeem Mohle, Stenographer जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट गेट 3, जमादार जो मेरे साथ हमेशा मेरी सेवा में रहे और मेरे सिर्फ संकेतों को समझते थे, ऐसे मेरे जमादार और मेरे साथी लोग रहे हैं, अश्विनी कुमार दुके, सुखनंदन सिंह और बिट्ट, और मेरे ड्राइवर जो हमेशा मेरे साथी रहा, मुझे कहीं भी आना जाना मेरे जीवन में उनका बड़ा एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करते हैं, रामचंद्र साहू, रामचंद्र जी, ड्राइवर श्री रामचंद्र सिंह राजपूत, इन सब के अथक परिश्रम के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बंगले में कार्यरत सभी कर्मचारी महेंद्र साहू, पंकज साहू, नंदिनी विश्वकर्मा, कन्हैयालाल कंवर, महेंद्र बहादुर, राम कुमार कंवर, पुष्पा नेताम, बब्बन चौहान, सब ने दिन रात मेरे और मेरे परिवार और मेरे अतिथियों की सेवा की। मैं आज हृदय से सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज मेरा दिन है, प्लीज मैं 2 मिनट और रहूंगा, मुझे क्षमा करें, क्योंकि आपने बहुत उदारता से मेरे लिए सब कुछ कहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जो लोगों ने जो भी मेरे पर विश्वास व्यक्त किया है, जिस उदारता के साथ मेरे लिए कहा है, मैं आपके इन शब्दों के प्रति खरा उतरूं और अपनी प्रामाणिकता को जीवन में कायम रख सकूं। आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए यही प्रार्थना करें कि मैं निष्ठा से जीऊं और निष्ठा से मरूं। मेरा जीवन आनंद और धर्म से भरा हुआ है। मैं अपने गुरुजनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति और विशेषकर मेरा आज एक ही कहना है, हम हिंदुस्तान में चारों तरफ जब दृष्टि दौड़ाते हैं, देखते हैं तो कुछ उथल पथल सा माहौल है, कुछ हिंसा का माहौल है। जहां हाथों में फूल होना चाहिए तो पत्थर है। इफ द रूल ऑफ लॉ इज नॉट मेंटेन इन कंट्री, नथिंग इज मेंटेन। हमारा विश्वास न्याय पर है। हमारे लिए हमारा संविधान भगवत गीता, बाइबल और कुरान है। मैं अपने संविधान पे इतना ही विश्वास करता हूँ जितना मैं भगवत गीता पे करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे धैर्य सुना, मेरे प्रति उदारता से सबके, पूरी रजिस्ट्री के अधिकारियों, कर्मचारियों, सबके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। Thank you very much again for listening patiently to me. Thank you very much. Jai Johar, Jai Chhattisgarh. May I have the permission of Honorable the Chief Justice to conclude the proceedings of the court? Yes. With the permission of Honorable the Chief Justice, I conclude the proceedings of the court and request your lordships, the distinguished guests and members of the bar to take light refreshment in honor of Honorable Chief Justice Gautam Chourdiya and Madam Sangeeta Chourdiya. I am very grateful to all the honorable judges, the distinguished guests and members of the bar for their gracious presence on this occasion.